नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ और हम लोग हैं नेशन नाउ पर। और जिस प्रकार महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, अब शायद ऐसा लग रहा है जो कंस्पिरेसी थ्योरी हम लोगों ने एडवांस करी थी, एक्चुअली मैंने एडवांस करी थी, प्रदीप जी ने नहीं, वो लगता है कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जिस प्रकार अभी शिव सैनिकों का गुस्सा सामने आ रहा है और जिस प्रकार एकनाथ शिंदे जी बोल रहे हैं डरता कौन है, जिस प्रकार उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर के बिना शिवसेना चला के देखो, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये शिवसेना जो दो फाड़ हुई दिखती है शायद वास्तविकता में हुई है। हो सकता है कि पीछे से मिली भगत ना हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार, मैं तो सिर्फ एक नाम लेता हूं, एकनाथ शिंदे जी की तो बात चलो ठीक है, एकनाथ शिंदे जी बड़े सीनियर नेता हैं। एकनाथ शिंदे जी ने ठाणे में और पालघर में और अलग अलग जगह पर शिवसेना का मतलब वर्चस्व ऐसे संभाल के रखा कि काबिल तारीफ है। लेकिन एक नाम जो मेरे जहन में आता है वो है राजन विचारे जी का। राजन विचारे जी जो ठाणे के मेयर हुआ करते थे, राजन विचारे जी जो दूसरी बार सांसद बने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, उनसे ज्यादा लॉयल उद्धव ठाकरे जी का और ठाकरे फैमिली का और कोई नहीं था। आज वो भी एकनाथ शिंदे जी के साथ दिख रहे हैं। इसके अलावा ना जाने और कितने लोग हैं जो सब ठाकरे फैमिली के टोटल एक्सट्रीम लॉयलिस्ट हुआ करते थे और आज की तारीख में वो सब एकनाथ शिंदे जी के साथ दिख रहे हैं। और एकनाथ शिंदे जी लग ऐसा रहा है कि कटिबद्ध हैं कि किसी भी तरीके से उद्धव ठाकरे जी का इस्तीफा वो लेकर के छोड़ेंगे, एक बार फिर तीसरी मर्तबा देवेंद्र फडणवीस जी को शपथ ग्रहण के लिए मजबूर करेंगे और खुद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लग ऐसा रहा है। प्रदीप जी, ये क्या हो रहा है? सर, आप देखो जिस प्रकार से संजय राउत ने आज रिएक्शन दिया, संजय राउत जी ने कहा कि वी आर रेडी टू टेक देम ऑन इन द हाउस एंड आउटसाइड टू। सड़क पे भी लड़ेंगे और हाउस में भी लड़ेंगे। तो दैट इज एन एग्रेसिव पोज ऑफ शिवसेना विच दे आर कमिंग आउट। And Uddhav Thackeray continuously reminding that great sacrifices that he has done for all these people, including Eknath Shinde, Mr. Rathod, अलग अलग लीडर्स को उन्होंने गिना के बोल दिया कि मैंने आपको ऐसे काम करके दिया जो कोई पहले नहीं किया था। एकनाथ शिंदे जी को बोला कि इनको मैंने वो पोर्टफोलियो दिए, वो मंत्रालय दिए जो सीएम हमेशा अपने पास रखते हैं, और मैंने ना सोच के मेरा ही पोर्टफोलियो उनको दिया, मेरे पास कोई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो न रख के ये पोर्टफोलियो सब इनके लिए इनको बांट के दे दिया मैंने। और उनको ने बात कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इज ऑलवेज विद द चीफ मिनिस्टर, ऑलवेज विद द चीफ मिनिस्टर, एट लीस्ट फॉर द लास्ट 30 years. Yes, that is the first time that he said he parted with that particular ministry. He gave it to for Eknath Shinde. He gave it to him. Yes. He said that is the kind of importance that he placed on Eknath Shinde. अब फिर अलग अलग चीज़ उन्होंने कहा। फिर एक चीज़ उन्होंने चेतावनी से भी कहा कि बाला साहब ठाकरे के फोटो के बगैर आप दिखा दो कि हाउ कैन यू टेक शिवसेना's नेम। ही सेज यू कैन, जो जाड़ का उन्होंने वर्णन दिया कि आप फूल ले सकते हो, फल ले सकते हो, हर चीज़ ले सकते हो, मगर रूट्स और पूरे जाड़ थोड़ी ले सकते हो। जैसे ही वाज सेइंग शिवसेना को आप ले नहीं सकते। शिवसेना इज द विद मिस्टर बाला साहब ठाकरे एंड देन इट कम्स टू द ठाकरे फैमिली. Nobody else can take that. And there's no identity of Shiv Sena apart from the Thackeray's. Thackeray's are an identity of that. But like, now that has been the forte, sir. If you talk about the Congress without Gandhis don't exist. Yes. The Congress has to be with the Gandhis. The NCP has to be with the Pawars. And Shiv Sena has to be with the Thackeray's. As Mulayam Singh and Akhilesh Yadav, the Samajwadi Party has to be a family. It has to. So it is synonymous with them. You can't part with them, and without them, the party doesn't exist. And he was rightfully saying. But then उद्धव ठाकरे जी ने हर चीज को एक एक चीज करके डिसिफर करके उन्होंने कहा कि मेरा कौन सा लोभ है। मैंने तुरंत, जब मुझे मालूम पड़ा कि आई डोंट एंजॉय योर कॉन्फिडेंस, मैंने तुरंत वर्षा बंगला छोड़ के सीधा रातों रात विदाउट इवन little bit of doubt, hesitation, I left my place and came back to my house, मातोश्री। मुझ में कोई लोभ नहीं है।
मुझ में कोई चीज नहीं, वो भी चीफ मिनिस्टरशिप, बिकॉज शरद पवार जी और बाकी लोग ने फोर्स किया कि यू आर, बाकी सीनियर मिनिस्टर्स है, आपको चीफ मिनिस्टरशिप लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो चीफ मिनिस्टर, आई हैव टेकन द सीएम्स पोस्ट. दैट इज व्हाट ही सेड. ही वाज ट्राइंग टू, इट वाज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ एग्रेशन एंड इमोशंस उन्होंने हाईलाइट किया कि मैंने शिवसेना के लिए क्या क्या किया, शिवसेना के एक एक कार्यकर्ता के लिए क्या क्या किया, एक एक लोग जो आज बैठे हैं उनको कैसे मैंने सपोर्ट किया. जैसे राठौड़ को अलग अलग 6 चार्जेस उन पे थे, लड़कियों ने वुमन मॉलेस्टेशन वगैरह क्या क्या चार्जेस उन पर थे, फिर भी उन्होंने कहा कि मैंने उनको संभाल के लिया, मैंने वो पोर्टफोलियो मेरे पास रख लिया, उनको सेव किया. तो उन्होंने गिना दिया कि मैंने क्या क्या शिवसेना के लिए किया. एंड Eknath Shinde on his part says that they don't enjoy the confidence majority तो मेरे पास है, ये तो अल्पसंख्यक में आ गए, and they were देर शाम उनका एक मीटिंग होने वाला जिसमें they are planning to move a no confidence motion against the present CM. Now all this is happening in the same, Sanjay Raut says that we have got Mr. Sharad Pawar with us, and Mr. Sharad Pawar is going to take us away from this trouble as he has always done. We also saw a sort of taunt between Ajit Pawar and Sharad Pawar. When people asked him questions, they said, "Why are you asking me? Sharad Pawar ji hai, Supriya Sule ji hai, Praful Patel hai, उनसे पूछिए, महाराष्ट्र के बाहर का उनसे पूछिए, उनसे सब चीज पूछिए उनसे, और महाराष्ट्र के बाद खासकर मुझसे मत पूछिए. महाराष्ट्र के बाद जो होता है मुझे मालूम नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है. इसे पवार साहब ने बोला तो ये सब प्रश्न वहां पर पूछिए. Now it shows, a line, what do you call, a divided house there. Pradeep ji, it shows that Pradeep ji, it shows everybody is talking to everybody. Everybody is talking and to everybody is jockeying for advantage. Yes. तो क्लियर कट अजित पवार जी के जो पहले उनका स्टेटमेंट था कि इसके पीछे कोई बीजेपी का बड़ा नेता मेरे को दिखा नहीं है जी. तो Mr. Sharad Pawar was aggressive when the reporters asked him about this particular question, when they say that Ajit Pawar ने ये कहा कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता इसके सामने दिख नहीं रहा है, तो बोले कि then that was the entire feud. अजित पवार महाराष्ट्र में बोल सकते हैं, महाराष्ट्र के बाहर जो दिख सकता है मुझे दिखता है कि गुजरात में क्या हो रहा है, सूरत से क्या हो गया, असम में क्या हो गया. So the divide slowly. Now I only hope that after a few days we find there's a breakup in the NCP. It might happen. Because the NCP are a group of leaders who have been bought in by Mr. Sharad Pawar. Only he can do it. They're all great leaders in their own right. They all command a huge respect in their own constituencies. And they don't need anybody to win. They don't require any party to actually win. So they are always waiting. They don't want to be on the wrong side of power. They will always be on the right side of power. And they cannot stay without power for a long time. And they've stayed without power for 5 years. Yes. And that is going to be the greatest factor because this prakar se aap dekhoge, now you name the most trusted lieutenants of Shiv Sena and Uddhav Thackeray ji. That includes Mr. Kesarkar from Konkan. Yes. We talk Mr. Gulab Rao Patil. We talk about Shambhu Raj Desai. Yes. All these people. And today Bhaskar Jadhav. Mr. Bhaskar Jadhav was the most vociferous and you can tell ferocious supporter of Uddhav Thackeray in the assembly. Yes. Any name on the Shiv Sena and he was the first person to stand up and war. It was like a war. He should take it as a personal insult. And he should storm the assembly, fight with everybody, raise his voice. He should never think, even wince for a moment that I shouldn't. He was the first, most vociferous supporter. And today they're just walking into Assam. They're just walking into Eknath Shinde ji. They're walking into Guwahati to meet them. It's like a picnic. It's like a picnic out there. Everybody coming to receive them in the airport and pick them up. और वहाँ पर facility किस प्रकार से है? All the VIP enclosure, the VIP exit of the airport, everything is reserved for the people coming from Maharashtra. Especially Shiv Sena MLAs coming from. And they also पूरे बैग लेके इस प्रकार से चले कि हमारा एक हफ्ता वहाँ पर spend करना है, पूरे पैकेज लेके जिस प्रकार से जाता है. And there was also attack from the rebels where one woman said that the leadership of the Shiv Sena has failed us. When she narrated that she was cancer affected and she expected, yes, and she was 3-time, 4-time probably cooperator, and she was totally, felt very bad that nobody from the Thackeray family went to see them.
went to even console them, went to talk to them. He said, this is not the way we work as a family and we expect it. Now these things are happening. Emotions here, emotions there, aggression here, aggression there. Before we lose the Yes, thread, yes, one yes, small yes, thing. yes, yes. आपको याद होगा 2019 में जब ये सरकार बनी थी, बिल्कुल। when this government was formed in 2019, Mr. Sharad Pawar had said, I have heard that Mr. Amit Shah is a magician. Yes. Let me see the kind of magic that he can perform right now and still bring the BJP to power. He had said that at that time. That was the challenge he had thrown to Amit Shah. Yes. Now, the challenge is on the other side. Let us see what sort of a wizard or magician is Mr. Sharad Pawar that he'll be able to save the MVA government. Now the onus is on him. बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। अब शरद पवार जी के ऊपर दारोमदार है। एक बार याद होगा कि शरद पवार जी ने ये पासा फेंका था अमित शाह जी की तरफ, ये कहते हुए 2019 में कि मैं देखना चाहता हूं, ये कहा जाता है कि अमित शाह जी चाणक्य हैं हिंदुस्तान के। मैं ये देखना चाहता हूं कि अब वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में कैसे लाएंगे। अब द शू इज ऑन द अदर फुट। अब ये सवाल उठता है कि शरद पवार जी किस प्रकार रोकेंगे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से। सीधी सादी बात है, आज की तारीख में जितने एमएलए वहां पहुंचे, मुझे तो अब याद भी नहीं है कितने, 46 हैं, 50 हैं, कितने, किसी को याद भी नहीं है। Totally, I think more than 50 and 40, 41 is the Sena MLA. This is absolutely amazing. This is incredible what has happened. So very clearly, something like this had been brewing for over a year. एक साल से Overnight. there was resentment. Naturally, a lot of people used to say that मातोश्री के दरवाजे नहीं खुलते हमारे लिए। एमएलए जो मिलना चाहते थे उद्धव ठाकरे जी से, उनको मिलने नहीं दिया जाता था, दरवाजे बंद थे। और एकनाथ शिंदे जी हमेशा लोगों के बीच में रहा करते थे। और साथ में यह भी कहा जाता था that there was a very high-handed way of dealing with people. सब लोगों ने यह कहा कि बाला साहब ठाकरे की जितनी मर्जी तबीयत खराब हो, जो भी हो, अगर उनको मालूम पड़ता था कि मेरा पुराना कार्यकर्ता आया है, सब काम छोड़ करके सबसे पहले उसको मिला करते थे। और उनकी गाली में, उनकी डांट में भी प्यार होता था। यहां पर सब लोगों का यह मानना है कि यहां पर मसला कुछ और ही है। यह जरूर है, उद्धव ठाकरे जी ने एक एक को याद दिलवाया कि किस प्रकार 5 साल तक आप सत्ता में थे जब आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, और उस वक्त यही लोग आकर के शिकायत करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको काम नहीं करने दे रहे। ये कहा करते थे कि देवेंद्र फडणवीस जी उनको काम नहीं करने दे रहे, कि सारी फाइल जो है वो पहले चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में जाती हैं, उसके बाद ही आगे निकलेंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। यही लोग थे जो आज की तारीख में उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ बोल रहे हैं। और जैसे ही उद्धव ठाकरे जी की सरकार बनी तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया, ही डिड द अनथिंकेबल, एब्सोल्युटली द अनथिंकेबल, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ मिस्टर शरद पवार एज चीफ मिनिस्टर, राइट अप टू द टाइम ऑफ मिस्टर पृथ्वीराज चौहान. The Urban Development Ministry has always been with the Chief Minister of Maharashtra. उद्धव ठाकरे जी ने सबसे पहला काम किया, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री निकाल करके एकनाथ शिंदे जी को दे दी कि आप जो हैं सबसे वरिष्ठ हैं शिवसेना में, ये आप संभालिए. The very fact that he was made urban development minister very clearly showed that within the Sena he was number 2 after Uddhav Thackeray. Now, अंदरूनी बात क्या है? क्या आदित्य ठाकरे जी बहुत ज़्यादा इंटरफियर करते थे? क्या उनके मित्रों का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था? क्या आदरणीय सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी को काम नहीं करने दिया? क्या उनको बेइज्जत किया गया? क्या उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया? क्या यहाँ पर अनिल परब जी का भी कोई रोल था? क्या यहाँ पर बाकी सब लोगों का भी रोल था? बाय द वे, वेयर इज मिस्टर अनिल परब? मतलब वो मुझे समझिए, अनिल परब जी जो राइट हैंड मैन उद्धव ठाकरे जी के, वो इस पूरे क्राइसिस के दौरान कहीं दिख ही नहीं रहे और ना ही कोई मतलब उनकी आवाज आ रही है. आज तो उनको अपने मुख्यमंत्री के पक्ष में बिल्कुल सामने ढाल की तरह खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. दूसरी चीज प्रदीप जी, एंड देयर रियली इजंट वेरी मच टू टॉक बिकॉज वी कैन ओनली स्पेक्युलेट राइट नाउ एज टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन. पहली बार देखा कि शिवसेना ने थोड़ा आक्रामक रूप अपनाया, किसी के ऑफिस के बाहर जरा तोड़फोड़ कर दी, कुछ पोस्टर वोस्टर कुछ तोड़फोड़ कर दिए, लेकिन ये शिवसेना का तरीका नहीं है.
आपको याद होगा शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे, छगन भुजबल जी जब अपने 17 लोगों को लेकर के चले गए थे कांग्रेस में, उस वक्त छगन भुजबल जी के घर पर हमला हुआ था। नारायण राणे जी जब छोड़ के गए तब विलासराव देशमुख जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, विलासराव देशमुख ही थे शायद। उस वक्त भी शिवसेना काफी उत्तेजित हो गई थी। आज की तारीख में मैं पहली बार देख रहा हूं प्रदीप जी, उद्धव ठाकरे जी यानी शिवसेना की सरकार है और शिवसेना इतनी शांति से पेश आ रही है, शिवसेना इतने संयम से पेश आ रही है, शिवसेना जरा भी उत्तेजित नहीं हो रही, शिवसैनिक जो हैं वो जरा भी आक्रामक नहीं हो रहे। मेरे लिए जरा यह अचंभे की बात है, यह शिवसेना नहीं है। बिल्कुल सर। एंड जिस प्रकार से फर्स्ट टाइम उद्धव ठाकरे जी ने आज बीजेपी को रिस्पॉन्सिबल किया, ही वाज स्लोली इग्नाइटिंग द पैशंस ऑफ शिवसैनिक्स, सेइंग दैट बीजेपी ने ये काम किया और आप लोग अभी तक शांत बैठे हो, आप लोग हमारे लोग अब तक शिवसैनिक जो है वो शांत बैठे। नाउ ही स्लोली मूविंग द टाइड टुवर्ड्स बीजेपी। नाउ मोस्ट ऑफ द शिवसैनिक्स यही तकलीफ है कि दोनों जगह हमारे ही लोग हैं। एकनाथ शिंदे भी also is a revered person within the BJP, within the Shiv Sena, as well as Uddhav Thackeray. Of course, he's in charge, the president of the Shiv Sena. But all these leaders were leaders in their own right. All were honorable men. All were solidly with Shiv Sena. All was, including, as you say, all the Kesarkar, Bhaskar Jadhav, yes, Eknath Shinde. They all swear. They all swear by the Sena. And the main thing is now, as Sanjay Raut says, now we are going to take them in the house and on the streets. Now, on the streets. Could he be taken seriously? I mean, I don't know. No, but the aggression was not there. It wasn't there earlier. It wasn't there earlier. He said, हम रुकने को तैयार है, हम MVA से निकलने के लिए तैयार है, MVA से अगर आप लोग आके बात करेंगे, हम MVA से हटने के लिए तैयार है. And that was what do you call a kind of thing that nobody liked it. Nobody liked it because how can you one person take a unilateral decision that we will move out of the, even saying that thing. Usually Sharad Pawar or Congress, they are very measured while talking about the alliance. They will always say, we will discuss among the alliance partners. We will discuss among the top three. Even when you talk about Ajit Pawar, you will say, Sonia Gandhi ji se baat karenge, Sharad Pawar se baat karenge, Uddhav ji se baat karenge. Nobody would give this kind of a rash statement that yes, we will move out of the MVA. Now this was something he did, probably he's taken an about turn from there and he's talked about aggression. Now the whole thing boils down that if the rebel groups today pass a resolution saying that we want to file a no confidence motion against the chief minister. Now that again you said, Sharad Pawar says, and the most important thing is Jayant Patil. He says, when the questions asked about him, about Eknath Shinde, he says Eknath Shinde is still a part of the cabinet. So how can he pass a no confidence resolution against his own government? He says they were only chanting Eknath Shinde Zindabad or Eknath Shinde. He said, but Eknath Shinde, so what? Eknath Shinde is a part of a cabinet. He is still a minister. And he has not given he is not resigned from the post, or he is not, the entire group has not shown no confidence against this particular thing, nor have they written a letter to that effect. So he says that's all part of the cabinet. But Pradeep ji over here, yes. There's a very, very, very important legal point that Jayant Patil made. Yes. एकनाथ शिंदे जी आज भी मंत्री हैं, बिल्कुल. इसके अलावा 4 और मंत्री हैं उनके साथ, जो एमएलए हैं. Exactly. अब ये लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की डिमांड कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इनको इस्तीफा देना पड़ेगा. जहां तक के as far as I know, the legal position is very clear. Mr. Eknath Shinde cannot ask for a no confidence motion against his own cabinet. That is against his own government. No, first he will tell that I am the original Sena and I withdraw support from the MVA. That but is what he will have to resign from the government. But he says if I am the original Sena, and see that's a point. If he's become the original Sena, he's got 2/3 of the people, so he becomes the party. He is the Shiv Sena. So they are trying to operate through the governor. So they give the Shiv Sena as backing out of this alliance, and then the governor decides. So this is all. No, but the governor. What can the governor do, Pradeep ji? No, if the Shiv Sena withdraws from an alliance. No, hang on a minute. Yes. What can the governor do? Governor maximum can call for the assembly, call for an emergency session of the assembly for a floor test. Bilkul. That's it.
Now, the deputy speaker will have to decide whether or not this resolution holds, because a minister in the government cannot sponsor a resolution against his own government. Yes, but he says, I'm not the minister alone, I am the party. That's I am fine. the party. So first resign as a minister. No, I am the Shiv Sena. I am the Shiv Sena. So Shiv Sena gives a letter to the governor that we withdraw support from the MVA. We withdraw Support from the alliance. We withdraw support from Mr. Uddhav Thackeray, from the chief minister. We withdraw support from the MVA. Uddhav Thackeray ji had given a letter of acceptance that we give support to this MVA, the Mahavikas Aghadi. Now this Shiv Sena gives a letter to the governor that we have withdrawn support. Fine. So how is he still a member of the cabinet? He can't be a member of the cabinet, and that's what I think. He can't be a member of the cabinet and still propose such a resolution or still propose a no confidence that is the most motion. interesting thing. So when he says, I'm the original Sena. Yes. And we are withdrawing support to MVA government. Correct. And what does the governor do then? The governor will ask for the next. Without the floor test, can he ask Fadnavis? If Fadnavis are the same, and they give a letter to Mr. Fadnavis that we support this, Shiv Sena today is supporting BJP to form the government. He can't. And they give a letter. The Supreme Court is very clear. Supreme Court is very clear. The floor test is the only test. That's it. Yeah, so that's what I'm saying. A lot of combinations, because the governor is a BJP man, the speaker is the MVA man. Yes. Speaker Saab yes. is not there anymore. Yes. So you got the house with the NCB. with the MVA, and you got the governor with the BJP. But so, it is the speaker who will decide, who is the lord and master of the Vidhan Sabha. But the question is, if the Shiv Sena party, the major party, which has more MLAs, the most MLAs, they withdraw support to the government, does it fall on its own, or again there's a floor test? No, even if they withdraw support, they will have to prove it. They withdraw support, and Mr. Fadnavis, and they give a letter supporting Fadnavis is 106, and Fadnavis goes with the... it doesn't work that way. The Supreme Court is very clear. There is a Supreme Court judgment to that effect. In fact, there are 3 Supreme Court judgments to that effect. That a floor test is the only test to prove confidence or no confidence. It cannot be just on the basis of letters. There has to be a floor test. Yes. Now, when the floor test takes place, the first objection that will come from the Deputy Speaker is, why has Mr. Eknath Shinde not resigned? Now, my point is this, Pradeep ji. अगर एकनाथ शिंदे जी वास्तविकता में सीरियस हैं, अगर मान लीजिए बिल्कुल सीरियस हैं इस मैटर में, तो कल तक उनका इस्तीफा आ जाएगा और बाकी सब मेंबर्स जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं इस वक्त, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मिनिस्टर हैं इस वक्त शिवसेना के, उन सबका इस्तीफा आ जाना चाहिए उद्धव ठाकरे जी को कि भाई आप में हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, वी कैन नॉट सर्व विद यू, देन वी आर इन फॉर अ सीरियस मैच. Anyway, we are in for a big battle anyway. It's either getting in through the governor or pushing this off through the house. Sir, the governor will have a huge role to play, yes. But the final role will be that of the Deputy Speaker. Yes. And if all the Shiv Sena members who are right now with Eknath Shinde do not break even after they come to Mumbai, then that's it. लेकिन यहां पर उम्मीद जो है उद्धव ठाकरे जी की और बाकी शिव सैनिकों की और शरद पवार जी की, वो ये है कि जैसे ही ये लोग मुंबई आएंगे उसमें से आधे से ज्यादा फिर वापस आ जाएंगे शिवसेना में, क्योंकि जो इमोशनल अपील है ठाकरे परिवार की उसको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते. So we are in for very, very interesting times, Pradeep ji. I think this is not going to be over soon. I think it's going to... Over the few years, Maharashtra been the epicenter of everything. Of changes in law. Yes. You know, moving the horizons of even the jurisprudence, even the legal, everything connected with governance, legal, everything we've seen, various ways. We found that Sushant Singh Rajput case being filed somewhere else. and being taken up somewhere else. And CBI yes. inquiry from somewhere. And the commissioner of police over here saying, yaar, where is the locus? Yes. In any event, as far as the assembly is concerned or parliament is concerned, the law is very clear. There's only one test, which is the floor test. They will have to face a floor test. That is, Uddhav Thackeray ji's government will have to face a floor test. और floor test में अगर उद्धव ठाकरे जी जीतते हैं, सरकार रहती है, और अगर हारते हैं
तो एक बार फिर पुनः तीसरी मर्तबा आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे बड़े अच्छे मित्र, एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और इस बार 2.5 साल तक मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही। उसके बाद क्या होता है वो तो चुनाव में तय होगा, लेकिन यह जरूर है कि शिवसेना में अभी जो हो रहा है वो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे और प्रदीप जी के लिए भी, ऊपर से चाहे हम हंस रहे हों, काफी दुखद है। किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. आप सब लोगों को एक बार फिर जय हिंद और जय महाराष्ट्र।